हमने कुछ ऐसा किया था. So essentially, if you have a function that is non-negative monotonic increasing over some interval, so if you have a function f of x that is monotonic decreasing, non-negative and integrable for all x greater than equal to 1, and f of n is, it gives us some kind of sequence, say an, then the integral 1 to infinity f of x dx and the series summation an runs from 1 to infinity converge and diverge together. भाई जब मैं कह रहा हूँ ये converge, इसका मतलब ये limit lambda approaches infinity 1 to lambda fx dx convergence का मतलब exists as a finite number, और diverge का मतलब ये limit diverge करेगा, that be infinity, or it would not converge at all. So that's the okay. So then हमने लिया था फिर example क्या लिया था हमने integral test के लिए, I think some 1 by p, right? हाँ हमने लिया था ये 1 by x raised power p, और चूंकि हम इसे दिखा सकते हैं f of x अगर है 1 by x raised power p, और हमने लिया था शायद p को positive, then we want to show that summation 1 by n raised power p converges if p is bigger than 1 and diverges if p is less than 1. तो उसका मतलब हमें दिखाना है integral 1 to infinity 1 by x raised power p dx जो है वो converge, ये हम ऐसे दिखा सकते हैं अगर दिखाएं कि converges if p is bigger than 1 and diverges if p is less than 1. तो उससे प्रूव हो जाएगा क्योंकि इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज है, ये पॉजिटिव फंक्शन है, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, और इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट? सो हमने फिर इसको इवैल्यूएट किया था कि we wanted to evaluate 1 to infinity 1 by x raised power p dx. इसको मैं लिखा था लिमिट as lambda goes to infinity 1 to lambda 1 by x raised to power p dx. फिर हमने कहा चूंकि अगर p 1 है तो इसका एंटीडेरिवेटिव डिफरेंट है, तो हमने इसको लिखा था then this should be equal to limit as lambda goes to infinity either log of x from 1 to lambda if p is equal to 1, or this should be x raised power 1 minus p divided by 1 minus p evaluated from 1 to lambda if p is not equal to. यही हमने किया था. Okay, so that would make it limit lambda approaches infinity. Log of lambda, log of 1 is 0 to minus 0 if p is equal to 1, और ये मिलेगा हमें 1 by 1 minus p into lambda raised to power 1 minus p divided minus lambda को value 1 देंगे, so just 1 if p is not equal to 1. So clearly अगर p 1 है तो as lambda goes to infinity this will diverge, और अगर p less than 1 है, अगर p less than 1 है तो इसका power positive हो जाएगा, which means that it will become very large. So which is equal to, of course, infinity if p is less than equal to 1. लेकिन अगर p greater than 1 है तो lambda का पावर नेगेटिव हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी जब lambda बढ़ेगा तो बाकी सारा कुछ घटेगा, तो ये 0 हो जाएगा. सो एक्चुअली इट विल बी इक्वल टू, हमें इसका वैल्यू भी पता है,
if P is bigger than 1, right? So which means that, so therefore I can say, therefore 1 to infinity 1 by x raised to power p dx converges if p is bigger than 1 and diverges if p is less than or equal to 1, and hence by integral test, by Cauchy's integral test, summation 1 by n raised to power p, n runs from 1 to infinity, would also converge if p is bigger than 1 and diverge if p is less than or equal to 1. Yeah. Okay. Now I would like you to apply this test to this. Show that home assignment. Show that summation, ये हमने किया है इससे पहले भी, लेकिन यहाँ पे हम ये इंटीग्रल टेस्ट से प्रूव करना चाहते हैं that this series n runs from 2 to infinity, p positive, right, converges for p bigger than 1 and diverges for p less than or equal to 1. Show that using, तो इसको कंडेंसेशन टेस्ट से भी कर सकते हैं जो हमने किया है, using the integral test. तो ये मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ, it should be easy, ज़्यादा मसला नहीं है. ओके, तो इसमें भी तुम्हें p equal to 1 के लिए अलग से करना पड़ेगा, राइट, ये तुम कर सकते हो. Now we come to the, I think जो हमारा last वाला test है for convergence of series, that's Gauss test. It's a little complicated, a little more sophisticated, और इसको हम ज़्यादा यूज भी नहीं करते, लेकिन कभी-कभी कुछ difficult situations में यही काम आता है, जो बाकी टेस्ट काम नहीं आते. We say if summation n runs from 1 to infinity, is a series of positive terms या non-negative terms, positive terms. Non-negative पता है क्यों नहीं किए थे? क्योंकि सपोज इसमें कोई जीरो हो तो उससे सीरीज पे कोई फर्क क्या पड़ेगा, है ना? इसीलिए नॉन नेगेटिव कहना पॉजिटिव कहना एक ही बात है, क्योंकि इसमें खाली जीरो ऐड होगा, उससे कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता. जीरोस डोंट मैटर इन द सम. एनीवे, सो एंड अगर ऐसा है, ये पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है और ये जो रेशियो है an divided by n plus 1, if this can be written as alpha plus beta by n plus gamma sub n divided by n raised to power p, where alpha is positive, p is greater than 1, and this sequence gamma n is a sequence, is a bounded sequence. अगर ये situation है, okay, we can write this ratio in this manner. Then first, if alpha is equal to 1, is not equal to 1, summation n runs from 1 to infinity converges if alpha is bigger than 1 and diverges if alpha is less than 1. Second case. Now if alpha is equal to 1, then things change and we depend upon this beta. Now if alpha is equal to 1, then summation n runs from 1 to infinity an converges if beta is bigger than 1 and diverges if beta is less than or equal to 1. So that's our S की properties. So अगर alpha 1 नहीं है, beta कुछ भी हो, अगर alpha 1 के बराबर नहीं है तो we are done. लेकिन अगर alpha 1 है, then we would depend upon कि क्या beta बड़ा है 1 से या छोटा है. Anyways, तो इसको हम चलो prove करते हैं कि ऐसा हमेशा होगा. So let's do the proof. पहला वाला बड़ा easy है. Take one when alpha is not equal to 1. So what does that mean? अगर alpha 1 नहीं है, we take this limit
an plus 1, n approaches infinity should be the same thing as lambda n approaches infinity alpha plus beta by n plus gamma n divided by n raised power p, of course. So that would be equal to this goes to 0, this goes to 0. Why this goes to 0? Because denominator goes to 0 and numerator is a bounded sequence. So it's some finite number, whatever n. तो नीचे infinity हो रहा है, finite divided by infinity is 0, this is 0. So it would be just alpha. So by ratio test, तो हम सीधे ratio test तब apply कर सकते हैं. Summation an n runs from 1 to infinity converges if alpha is bigger than 1 and diverges if alpha is less than 1. And of course, the test would fail in this case if alpha was equal to 1. है ना? तो second case तो हम लेते हैं. If alpha is equal to 1, then of course an divided by an plus 1 is then, of course, अगर alpha 1 है तो it would be 1 plus beta by n plus gamma n divided by n raised to p. So which would imply that an divided by an plus 1 minus 1 multiplied by n would be equal to beta by n plus gamma sub n raised to p minus 1. क्योंकि मैंने n से मल्टीप्लाई किया 1 को यहाँ ले गए, डन. नहीं, बीटा ठीक है, बीटा by n था, यहाँ बीटा ये हट जाएगा ना इसका, राइट. n से मल्टीप्लाई करने से यहाँ खाली बीटा रहेगा. So it should be, so this is what I have, and if I take the limit as n approaches infinity, n into a sub n divided by n plus 1 minus 1, this would be beta, right? And this would go to 0, right? So hence by अब Raab's test apply होगा. So by Raab's test, summation an runs from 1 to infinity converges if beta is bigger than 1 and diverges if beta is less than 1, right? Now the question is, what happens when beta be 1 hai or alpha be 1 hai? Now in case beta is equal to 1, then I have, what do I have? an divided by a sub n plus 1 is equal to 1 plus 1 by n plus gamma n divided by n raised to p. Now beta be 1 hai, alpha be 1 hai, right? Now we compare the series with summation bn runs from 1 to infinity, where this nth term is equal to 1 by n log n. And I think this diverges. Now, हमने इससे पहले प्रूव किया है कि this will diverge. Just compare it with 1 by n. हाँ तो हो जाएगा 0. नहीं, मतलब और भी तरीके हैं इसको करने के. हमने किया था इसका. Actually हमने किया था more general. n into log of n raised to p. Okay, it would diverge for p less than equal to 1. So 1 के लिए p, of course, it would diverge. Anyway, ये हमने किया है by condensation test. बहुत सारे tests जो हमने इससे पहले किए थे. Okay, so we compare it with this. यानी हम क्या लेंगे? हम इस ratio को इस ratio से compare करेंगे. I take an divided by an plus 1 minus bn divided by bn plus 1. वो होगा 1 plus 1 by n plus gamma n divided by n raised to p minus n plus 1 into log of n plus 1 divided by n log of n. Now this can be written as
गामा ऑफ n डिवाइडेड बाय n रेज पावर p प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ एज n plus 1 by n, यहाँ वो कॉमन है, so it will be 1 minus log of n plus 1 divided by log of n. Okay, so that can be written as gamma sub n divided by n raised by p plus n plus 1 divided by n. यहाँ पे हम लिख सकते हैं minus log of n plus 1 minus log of n plus log of n. मतलब मैंने एड और सब्ट्रैक्ट किया, उसकी वजह है जो तुम अभी देखोगे. This can be written as gamma sub n divided by n raised to p plus 1 plus 1 by n या n जो भी जिस तरह से लिखो into देखो log m minus log n, so it should be 1 minus log of n plus 1 by n, right, minus log of n plus divided by log of n. So 1 और 1 cancel हो जाएगा. So let me write it as gamma n divided by n raised by p plus 1 plus 1 by n into be 1 or 1 cancel. I can straight away write it as minus log of n plus 1 divided by n. माइनस ही आएगा. मैंने क्या लिखा था, ये माइनस है, माइनस किया मैंने तो ये आ गया. So it is 1 plus chalo divided by log of n. I hope I did it right. ठीक है. So next मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, यानी मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो है an divided by an plus 1 minus bn divided by bn plus 1. और मैं ये जो है n by p कॉमन निकालूंगा, यानी I write it as 1 by n over p. अंदर बचेगा गामा n माइनस so एक तो था n plus 1 और n एक था तो it should be n by in the denominator I had an n, so let me write it first ऐसे. सब sorted हो जाएगा n raised to p minus 1 right, क्योंकि मैंने p लिया था एक n. ठीक है, जब अंदर जाएंगे तो यहाँ n बचेगा, that's right, divided by अपना log of n, right. So what I do now, so what do I have now? But limit n approaches infinity, log of 1 plus 1 by n, how do I write it? Raised to power n, ठीक है, चलो ऐसे लिखते हैं, बाद में थोड़ा एक्सप्लेन. It is log of 1 by n. अगर मैं इसको लिमिट लूं, as you know this will be e, यानी log of e is 1 और ये होगा log of 0, that's 1. So this is actually equal to 1. Since limit n approaches infinity, 1 plus 1 by n raised power n is equal to e, and log of e is equal to 1. So ये 1 आ जाएगा, ये 0 है, obviously it's log of 1. So this would be 1, right? That means, लेकिन इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था ना, limit n approaches infinity, log of a into log of a plus log of b, यानी ये होना चाहिए log of 1 plus 1 by n raised to power n into 1 plus 1 by n is equal to 1. Which implies that is limit n approaches infinity, log of 1 plus 1 by n raised to power n plus 1 is equal to 1. So which means by the rules of the logarithm, limit n approaches infinity, n plus 1 times log of 1 plus 1 by n is equal to 1. यानी ये limit 1 को approach करता है, right? Or how about this? देखो p is bigger than 1, and since p is bigger than 1,
That means p minus 1 is positive, so therefore limit as n approaches infinity, n raised power p minus 1 divided by log of n will go to infinity. क्योंकि हम दिखा चुके हैं जब p n का कोई पॉजिटिव पावर है तो ये log n से बहुत तेजी से निकलता है, तो ये as n approaches infinity this will become very very large and this will become infinity. Therefore, and since gamma n जो ये sequence है by my assumption is bounded, तो कहने का क्या मतलब है, अब देखो ये जो सारा है यहाँ पे दिस ये बन रहा है 1, ये बन रहा है infinity और ये है बाउंडेड, तो इसका मतलब ये जो सारा है ये माइनस इन्फिनिटी बनना चाहिए, है ना, ये नेगेटिव होना चाहिए ये नंबर, राइट? Okay, as n becomes very very large, so that's what we are going to utilize. So it is bounded, so therefore gamma n minus n plus 1 into log of 1 plus 1 by n into n raised power p minus 1 divided by log of n is negative for sufficiently large n. So therefore there exists a positive integer m such that gamma n minus n plus 1 log of 1 plus log of 1 plus 1 by n into n raised power p minus 1 divided by log of n is negative for all n bigger than equal to n. और अगर ये नेगेटिव है और ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड नेगेटिव. So which implies that an divided by an plus 1 minus bn divided by bn plus 1 is negative. There exists a positive integer m such that this is true for all n bigger than equal to n, which means that an divided by an plus 1 is less than. तो हमने जो तीसरा कंपैरिजन टेस्ट एक्चुअली आई थिंक किया था, जब ऐसा होता है अगर ये डाइवर्ज करता है bn तो an भी डाइवर्ज करेगा, and since so therefore and since चलते हैं summation bn and runs on to infinity diverges, therefore by comparison test summation n runs from 1 to infinity diverges. तो जो हमें चाहिए था वो हमें मिला, यानी what, यानी हमें ये पता चला कि अगर अल्फा 1 नहीं है, अगर अल्फा बिगर देन 1 है तो कन्वर्ज करता है, राइट, बीटा कुछ भी हो, और अगर अल्फा लेस देन 1 है तो डाइवर्ज करता है. और इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 और अल्फा बिगर देन 1 है तो बीटा आएगा, बीटा बिगर देन 1 है तो कन्वर्ज करता है, और अगर बीटा लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्ज करता है. Now once you can write a series as this ratio, अगर तुम इस तरह से लिख पाओ, gamma n plus alpha by n plus gamma, मैं क्या लिख रहा हूँ, alpha plus beta by n plus gamma sub n divided by n raised by p is greater than 1 and gamma n is bounded sequence. Alpha be positive, of course. तो ऐसा होता है तो we can. So let's do an example, right? जैसे ये सीरीज है, इस टाइप की सीरीज के लिए ज्यादा लगता है जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ. तो इसके लिए जो नहीं स्क्वायर एक जैसे पावर्स हमारे पास में, जैसे एग्जांपल अगर मैं लूंगा 2 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर plus 2 square into 4 square divided by 3 square into 5 square plus so on, and इसी तरह से 2 square
into 4 square into 6 square divided by 3 square into 5 square into 7 square. अगर मेरी सीरीज इस तरह से है, so if I take here a sub n is equal to 2 square into 4 square up to जाएगा to n square तक, of course. Well, then in the denominator I should have 3 square, 5 square, should be 2n plus 1 का square तक जाएगा ये. Okay, so अगर मैं अब देखूं ये ratio an divided by an plus 1. So that's very easy because an plus 1 किसके बराबर होगा? That will be 2 square, 4 square, 2n square into 2n plus 2 square divided by 3 square, 5 square plus 2n plus 1 square. इसके बाद हमें मिलेगा 2n plus 3 square. जब भी मैं ये इस तरह से लिखूंगा तो खाली 2 टर्म्स बचेगी. That is I will get 2n plus 3 का square divided by 2n plus 2 का square, right? And if you take the limit as n approaches infinity, तो क्या मिलेगा हमें? So I think this would be equal to 1, right? So, but of course, therefore ratio this will fail. Right. So therefore, what you do? Let's do our जो हमने नया सीखा. So an divided by an plus 1 is equal to 3n plus 3 का square, 2 का square. 3n plus 3 था 2n plus 3 divided by 2n plus 2 का square. अगर हम इसको ऐसे लिखें 1 plus 3 by what should I do? 1 plus 3 by 2n और नीचे लिखे 1 plus 2 by 2n. Numerator और denominator दोनों को मैंने ऐसे डिवाइड किया. Then I write it as 1 plus 3 by 2n का square into 1 plus 2 by 2n को भी लिख सकता हूँ 1 by n whole raised power minus 2. अब चूंकि ये जो 1 by n है, it would be always less than 1. So मतलब because n is bigger than or equal to 1. So therefore I can use this binomial theorem for negative coefficients. You can define it as a series, which is basically the Maclaurin series. So हम इसको लिख सकते हैं as a expand कर सकते हैं as a binomial thing. That's binomial theorem for negative binomial theorem for negative coefficients. I can write it as 1 plus 3 by 2n multiplied by square है यहाँ पे multiplied by. तो अब जो वो binomial theorem for क्या बोलते हैं negative coefficients है, उसमें हमें पता है कि 1 plus x raised power minus 2, लेकिन it's only valid when this x is less than 1. This is equal to 1 minus 2x plus 3x square minus 4x cube plus 5x raised power 4, but it would be infinite series, which of course converges. जो हमें पता है, you can check that. तुमने वो Maclaurin series पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो doesn't matter. तो हम अगर इस पे ये लगा दें, वो हम आगे पढ़ेंगे फिर. So it would be minus 2 by n plus 3 by n square minus 4 by n cube, इसी तरह से plus 5 by n raised power 4 minus plus plus करके. So this is what I did. So but that can be written as 1 plus 9 by 4 n square plus 3 by n, right, whole multiplied by 1 minus 2 by n plus 3 by n square minus 4 by n cube, so on and so forth. Right? ये बन जाएगा. अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो पहले 1. So let me इसको जरा देखना पड़ेगा, गलती हो सकती है. So what I do, it would be 1, then 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करें, so मतलब एक तो ये और ये मुझे देगा n वाली टर्म. 1 तो एक ही
कांस्टेंट टर्म तो सिर्फ ये इसको इसके मल्टीप्लाई करने से आएगी, लेकिन लीनियर टर्म जिसमें सिर्फ n के पावर्स आएंगे वो या तो ये होगा या ये होगा. सो इट वुड बी ईदर, मैं ऐसे लिखता हूँ प्लस माइनस 2/n प्लस 3/n आएगा और बाकी टर्म्स हायर पावर्स आएंगे. इसी तरह से n स्क्वायर वाली टर्म कौन कौन सी आएगी, या तो मैं इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ या इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँ या इसको इसके साथ. मतलब 3 टर्म्स आएंगी n स्क्वायर वाली, बाकी सारी आएगी उसके हायर पावर्स. मेरे कहने का मतलब है आई कैन राइट इट लाइक दिस. और देन जो 3 टर्म्स आएंगी वो क्या आएगी n स्क्वायर वाली, एक तो है 3/n स्क्वायर, राइट, और दूसरा आएगा 3 2s are -6/n स्क्वायर, और देन 9 plus 9/4n square. Or then I would have higher powers, है ना. So I can write then बचेगा क्या, would have plus minus, write it like this. चलो, so whatever. तो इसके बाद क्या बचे, क्यूब वाली टर्म्स -4/n cube plus 5/n raised to 4, something like that, है ना. Actually I shouldn't write it like this. See, मैंने खुद ही यहाँ थोड़ा जंबल किया. चलो यहाँ रब करते हैं. Okay. So what I am trying to say, I can write it in this manner. चलो पहले इसको ऐसे करते हैं. So then you have got higher powers of n. मतलब कहने का मतलब यही है that you have got higher powers of n. चलो मुझे लिखना चाहिए plus gamma n, where gamma n is equal to, like this. नहीं अभी रहने दो. अभी इसको एक तो हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ, तो हम और बचेगा क्या, बचेगा इन तीनों को तो हमने आपसे मल्टीप्लाई किया. एक्चुअली शुड बी इक्वल टू दिस थिंग प्लस, थोड़ा लंबा चौड़ा है, व्हाटएवर जो भी इसके बाद होगा वो क्यूब के पावर्स होंगे. मैं लिखता हूँ चलो यहाँ पे हायर पावर्स ऑफ n. तो मैं लिखूंगा पावर्स ऑफ n. चलो मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, ऐसे लिखते हैं. चलो टर्म्स इन्वॉल्विंग पावर्स ऑफ 1/n powers of n greater than equal to 3, right. मतलब 3 से ऑनवर्ड जो पावर आए, so that can be written as 1 प्लस, अगर मैं इसको लिखूं तो भी 1/n, और अगर यहाँ मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करूँ तो भी -3/4n स्क्वायर प्लस जो भी है टर्म्स ऑफ पावर्स, टर्म्स इन्वॉल्विंग पावर्स ऑफ 1/n हायर देन. ठीक है. नाउ okay, so then I can write an by an plus 1 is equal to 1 plus 1/n minus 3/4, या प्लस लिखता हूँ मैं -1/n square plus terms involving to be have powers of 1/n higher than 3. ठीक है ना, higher than bigger than 2. चलो greater than equal to 3 या bigger than 2 एक ही बात है. So what does that mean? If अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1 plus 1/3 plus 3/4 into gamma n. ठीक है. So तो अब मेरा फॉर्मूला बन जाता है. आई थिंक वो बन गया. सो चाहे तो मैं यहाँ n स्क्वायर को कॉमन लेते हैं यहाँ पे. तो यहाँ n स्क्वायर कॉमन लेते हैं, अंदर आएगा -1 प्लस टर्म्स ऑफ 3 से बड़े थे 2 बाहर आ गए, तो टर्म्स इन्वॉल्विंग 1/n एंड इट्स हायर पावर्स. आई होप तुम समझोगे. अब देखो अगर मैं ये ऐसे लिखता हूँ, नहीं इसको ऐसे ही लिखो, अभी गामा एन इसका नाम मत रखो. गामा एन ये सारे का सारा है, यानी इसको मैं ऐसे लिखूंगा. ओके,
यानी an divided by an plus 1 is equal to 1 plus 1 by n. I can write plus 1 by n square into gamma n, where gamma n is equal to, क्या मिलेगा मुझे, मैं जानूंगा क्या मिलेगा मुझे, 1 by n square को मैंने ऐसे लिखा, minus 3 by 4 plus terms involving 1 by n powers of 1 by n. ठीक है. Now as you can see, now clearly अगर मैं उसके साथ कंपेयर करूं, अल्फा 1 है, बीटा भी 1 है ना. So what do we get? और ये जो गामा n है, अगर मैं इसको एज अ सीक्वेंस ढूंढूं, it's a convergent sequence, क्योंकि as n goes to infinity this will go to minus 3 by 4, is convergent and hence bounded. तो एक बाउंडेड सीक्वेंस है. यहाँ मुझे मिला n raised power p, where this p is bigger than 1. So what would happen in this case? So therefore the series must diverge, right? Converge. So therefore now by my formula, कि अगर बीटा भी 1 है, अल्फा भी 1 है, therefore by Gauss test, थोड़ा सा complicated test है पहले से, summation a n n runs from 1 to infinity must diverge. ओके, हम और भी कर सकते हैं इसके एग्जांपल्स, जैसे लेट्स सी, बुक पे देखते हैं क्या क्या है. और हमने जो ये किया, ओके, इसी तरह से यू कुड हैव अ सीरीज. चलो ये होम असाइनमेंट, इसी तरह से बिल्कुल यही तरीका करना होगा. इस द सीरीज ऐसे है, समेशन 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2n minus 1 का स्क्वायर into x raised power n minus 1 divided by 2 square into 4 square up to 2n का होल स्क्वायर. ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, लेकिन इसमें x है. पहले तो तुम रेशियो टेस्ट से दिखाओगे कि x लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा, फिर x इक्वल टू 1 के लिए तुम करोगे अपना ये गाउस टेस्ट. So I think ये इस पे दिया भी है वैसे सॉल्व, तो इसको तुम देख लोगे. बिल्कुल यही, क्योंकि सेम मेथड फॉलो होता है, तो आई डोंट नीड की, मतलब सेम आइडिया जो भी हमने किए वही होंगे. सो ओके, इसके बाद है, हम कर सकते हैं, आई थिंक वी हैव गॉट 1 मिनट लेफ्ट. चलो ये कम कल करते हैं आगे. लेट्स स्टॉप, लेट्स एंड इट हियर.